Uh, we are always fascinated by the robots because they have those qualities that we want to see in ourselves. Good morning to one and all present over here. I, Daksh Porwal, IIC leader, ECE department at Srijan Entrepreneurship Cell, welcomes you all to the day 3 of this industrial conclave under the theme The Scope of Innovation in Electronics Sector for Aatma Nirbhar Bharat in association with IEEE. We have had some amazing talks in the past few days by Samir sir and Pranay sir. For today we have the Mr. Mudit Thakkar, aka Robot Man, who is the founder and CEO of Edo Square with a motto empowering through skills. He is also the president of Ask Foundation, a non-profit organization that is bridging the gaps between job seekers and employers through training, networking, competitions, and internships. He has trained and inspired 20,000 plus students and professionals on innovation, creative thinking, leadership, teamwork through courses like robotics, 3D printing, programming languages, IoT, and etc. He has worked with 20 plus prestigious educational organizations of Central India. He always believes that journey of 1,000 miles starts with a single step. So, without any further ado, I would like to invite Sir to take the session forward. I think there is some technical issue with Sir. Uh, he'll be back. Uh, Sir, am I audible? Hello. Hello, Am I sir. audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Am I on the screen? Yes, sir, you are on the screen. Okay. Okay, got it. So, Yes, sir. just starting my session, there are some technical issues with my laptop. So, just wanting to connect from there also. But before that, just let me start my presentation. And thank you, Taksh, and the overall student team for inviting me. Also, to the electronic department who have organized this specific session on Atmanirbhar Bharat. So I was having one presentation with me, but probably due to this overall glitch in the technical terms, probably I'm not able to connect my laptop. But I'll try to fix it as soon as possible. But before that, let me also start my presentation. So the theme of the today's topic is the scope of innovation in the electronic sector for Atmanirbhar Bharat. So, what exactly is all about this overall this new technology is that we will discuss first, and then what I'll do is I'll present the opportunities that are present right now in front of us as Indian citizen, as well as if I talk about electronic students or the graduate students, what are the specific opportunities that are available, and then we will take some questions specific from all the students about how to go into this type of technologies into a deeper way. So let me start by presenting what exactly Atmanirbhar Bharat is. So if I talk about Atmanirbhar Bharat, it is a very important and the relevant announcement done by Government of India, specifically in terms of what you can call sustaining ourselves into the new world. So
Taksh, can you take my other screen onto the main window? Okay, thank you. Okay, so just give me a minute. Okay, let me share my presentation also. Is it visible right now? Okay, good. So this is the overall. So why Atmanirbhar Bharat? This is a very important question to be asked. So analysts are hopeful that the Prime Minister Narendra Modi Atmanirbhar Bharat program will be a bigger success than Make in India project, which was earlier declared by Government of India in 2014. There are major difference between the both of this scheme. In Make in India, we want to focus on assembling of the components and then re-exporting it to the world. But specifically, if I talk about Atmanirbhar Bharat, it is self-reliance. It is developing each and everything by ourselves. So there is a major difference in the ideological difference between Atmanirbhar Bharat and what you can call Make in India. Focusing specific, so this specific scheme is majorly there for specific sectors like electronics, pharmaceutical and labor-intensive industrial work are the major biggest beneficiaries of this overall thing. So a new class of problem that will be solved through this. If we want to really focus on ourselves, on making ourselves self-reliant, we must have to have a major focus on the design in India as well as manufacture in India. Because if I talk about the overall scenario, we are manufacturing multiple or what we can call, we are assembling multiple things in India, but the overall design, the electronics and the overall design of any components are majorly not our IP, and this is something which is a major setback. So if I talk about this Atmanirbhar Bharat, we must have to have a self-reliant mechanism of designing the things, overall things in India as well as manufacturing the things. So it will really empower the IP as well as the overall scenario in terms of generating businesses. I'll also like in the coming slide, I all those who have previously listened me would know that I love to speak in the combination of Hindi and English. So I'll talk a bit in both the languages so that it would be more comfortable for me to communicate as well as for you also to know what is the better like what is the overall intention behind creating this PPT. So next one. So there are multiple problems that we have to solve. आज के इस प्रेजेंटेशन में मुझे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को जो है उसमें हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और मुझे ये भी कहा गया है कि जो ऑडियंस है वो मेजरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं और वॉनबी टेक्नोक्रेट्स जिनको बोल सकते हैं वो लोग हैं. सो हमें ये डिस्कशन करना होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत ओवरऑल जिस रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं उसमें हमारे पास में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. स्पेशली अगर जब मैं इन कोविड-19 के टाइम के बाद की बात करूं तो बहुत सारी न्यू चीजें हमारे सामने आ चुकी है. मैं उसको आगे आने वाली स्लाइड में एज अ अपॉर्चुनिटी आपको शो करना चाहूंगा. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग को सॉल्व करनी है वो है फेशियल रिकॉग्निशन, जो आज वर्ल्ड में जिसको बोल सकते हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी और एक न्यू प्रॉब्लम के रूप में खड़ा है, और उसको हम लोग को सॉल्व करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अब देखिए, आपने अभी सुना भी होगा कोविड-19 के बाद में देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु आर डेवलपिंग हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ फेसेस विद अ मास्क. So this is some of the problem that we are that needs to be solved. हम लोग प्रोसेस ऑटोमेशंस, अगर हम होटल में चेक इन करते हैं, कस्टमर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस ऑटोमेशंस है उसमें देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू सॉल्व. हमें कस्टमाइज रिकमेंडेशंस जो है वो
अब आप देखते हैं आजकल हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं या हमारे जो ओवरऑल पैटर्न है, हमारा जो ब्राउजिंग पैटर्न है या जो हमारा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आज बहुत बड़े स्तर पे एड्रेस की जा रही है अक्रॉस वर्ल्ड। ब्राउजिंग कंटेंट सर्च हम लोग जो देखते हैं वो सर्विलांस, overall security is another thing that had been a major interest of all the scientists across world. Criminals, so like जितने भी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं तो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका जो वर्क करने का स्टाइल है वो भी ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स के बजाय अब नए टाइप के क्रिमिनल्स हम देख रहे हैं। तो उसको कैसे हम रोक सकें और उसको कैसे हम कैचअप कर सकें। इतने सारे डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कार्स एंड बाइक्स एंड एवरीथिंग पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, स्पेशली हम डेवलपिंग कंट्री और इंडिया बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अक्रॉस वर्ल्ड। तो हमारे सामने ट्रैफिक लॉज को इन्फोर्स करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। क्राउड को, इतने बड़े क्राउड को, चूंकि स्पेशली अब कोविड-19 के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, तो उसको मैनेज करना, ड्राइविंग जिसको हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ओवरऑल जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जिनकी बात करते हैं वो, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज बीइंग सॉल्व्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारे सिस्टम्स, हमारे कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज को जान सकें, प्रोसेस कर सकें और रिजल्ट्स आउटपुट में ला सकें। स्पीच रिकॉग्निशन इज वन सच पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। स्पीच ट्रांसलेशन, इफ आई एम टॉकिंग इन हिंदी और इंग्लिश में, मुझे अगर इसको स्पेनिश, फ्रेंच और संस्कृत में कन्वर्ट करना है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वर्ल्ड बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और दूसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। हम लोग देखते हैं अपने आसपास में आज बहुत सारे पर्सनल, जनरलाइज्ड पर्सनल जिसको बोल सकते हैं असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक एलेक्सा, सिरी, Google Assistant, but we would require more such assistant specifically which is intelligent, which is more of a personal nature sort. So there are so many other problems also which must be there and which must be solved. But आप लोग के इस presentation के पहले जो मेरे दिमाग में major points दिमाग में आ रहे हैं, चूंकि प्रॉब्लम्स को हमको अगर सॉल्व करना है, so what are the major टेक्नोलॉजीज जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, जिसमें हम आगे काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शुरुआती प्रेजेंटेशन है इसको मोर ऑफ टेक्निकल लेके फिर बाद में हम एक जनरलाइज टॉक की तरफ आगे जाएंगे। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमने देखा है एआई एंड एमएल इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग थिंग्स राइट नाउ, स्पेशली इन द स्टूडेंट्स फेटर्निटी ऑल्सो। आज हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे बिजनेसेस में इंटेलिजेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं और प्रेडिक्शन किए जाते हैं, डेटा एनालिसिस किया जाता है। आज हम जानते हैं और हमने कई मल्टीपल सोर्सेस से सुना हुआ भी है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा पे ही जो है पूरा जिसको बोल सकते हैं आगे जाके जो रिचेस्ट कंट्री है वो डेटा के ऊपर ही अपने आप को रिचेस्ट बना पाएगी। पहले जिन कंट्रीज के पास में ऑयल, पेट्रोल, गैस होते थे वो अपने आप को रिचेस्ट कहते थे। तो वो जब डेटा हमारे पास में होगा तब हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू स्मार्ट डिसीजंस एंड प्रेडिक्शंस ले सकेंगे। एंड हमारे साथ में मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा वैसे, बट बीइंग अ सेकंड पॉपुलेटेड, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड, हम लोग के पास में अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इन टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से लेवरेज कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत इजीली अवेलेबल है जो बहुत सारी कंट्रीज के पास में नहीं है। आईओटी एंड कंप्यूटिंग एवरीवेयर। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी, अभी एक दो स्लाइड मैंने आगे उसके लिए स्पेसिफिकली बनाई भी है। सो कंप्यूटिंग एवरीवेयर, automation everywhere is the new term that is going on across world. Telecom infrastructure with new type of connectivity. We have seen 2G, we have seen 3G, we are now experiencing 4G, and in sooner will experiencing 5G and later on also. So telecom infrastructure is also moving a lot. We are
for mobile devices and internet connected smart devices with us, and it will increase in coming times, and it will go to the remotest possible area across the world, and specifically if I talk about India. So telecom infrastructure is also one of the major technologies that is coming up. Sensors, cameras, AR, VR, augmented reality, virtual reality is also the things which is picking up right now with the infrastructure that is coming up. So AR and VR is something which is virtual reality. You feel you have an experience of all the things which is not physically present in front of you, but you have a physical feel and what you can call interaction with these devices. So it is something which is a revolutionary technology which is coming up right now. Cloud computing infrastructure. Why? Because all the things, if I talk about IoT, computing everywhere, automation everywhere, all the things will go to what we can call servers. And if it is going to server, cloud infrastructure management is one of the very key important points that can be looked after. 3D printing. So next important thing which is very close to my heart and which I like most is 3D printing. 3D printing is also one of the key aspects of new manufacturing. So it is a kind of additive manufacturing in which you can customize the design by yourself, and you can always develop the things at a go with a 3D printer available at your home or at your industry or at your offices. So before 3D printers, it was a very complex process to ideate and to implement the things at a go. But right now, even we are experiencing. I am working into the field of robotics and automations from last 8+ years, and I have seen tremendous changes after using an implementation of a 3D printer. Because as soon as you ideate something, जैसे ही आप कोई नई चीज सोचते हैं, आपके पास में 3D printer आपको इनेबल करता है कि उस चीज को आप लाइव फिजिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देख सकें. और इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे 3D प्रिंटर एक रेवोल्यूशन के रूप में आ रहा है और आगे आने वाले समय में आएगा. आज हमारे पास में मेटल से लेके प्लास्टिक से लेके बहुत सारे अलग अलग फील्ड में 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं. आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें एक कार को 3D प्रिंटर के माध्यम से, और आगे आने वाले समय में हम लोग घर, हमारे जो होम्स हैं उनको भी हम 3D प्रिंटेड होम्स के रूप में देखेंगे. सो ऐसे लोग जो इस फील्ड को समझते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस लगने वाला है. जेनेटिक एंड कोड ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स, जो हमारे फिजिकल बायोलॉजिकल थिंग्स है उनको समझने के लिए जो साइंस यूज होता है, वो मटेरियल्स जो है हमारे आसपास में हम देखते हैं कि आजकल ऐसे मटेरियल आ चुके हैं जो कि स्टेन प्रूफ है, वाटर प्रूफ है. हमारे कपड़े ही हम लोग देखते हैं आजकल बहुत नए नए क्वालिटी के आने लगे हैं जिसपे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. सो इस टाइप के न्यूअर मटेरियल जो है वो बहुत सारे वर्ल्ड में डेवलप हो रहे हैं. डेटा बिजनेसेस, जिसको हम लोग डेटा साइंस कहते हैं. सो डेटा के ओरिएंटेड काम जो है वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे पास में आ रहे हैं. डेटा एक्यूमुलेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रेडिक्शंस एंड ऑल डिफरेंट स्टफ व्हिच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डेटा. And last but not the least, which is fourth industrial revolution, in which we will see multiple robots coming up, which will help us not only at the industrial level or at the bigger level, but हम आगे आने वाले समय में अपने घरों में भी, अपने हाउस होल्ड्स में भी और अपने आसपास के नियर रीजन्स में भी हम लोग बहुत सारे रोबोट्स जो हैं उनको देखने वाले हैं. और ये टेक्नोलॉजी जितनी भी मैंने ऊपर से नीचे तक डिस्कशन करी है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो सकेंगी. इसलिए मेरा हमेशा बहुत समय से एक ये मानना रहा है कि आप इंजीनियरिंग भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, दिस इज रियली नॉट अ मैटर. आज जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है. अगर आपको आईओटी पे काम करना है तो आईओटी को मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं कह सकता. उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मैकेनिकल भी है, उसके साथ में चूंकि आप अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट डिजाइनिंग भी है, और थर्ड उसका
जो उसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो भी है, और साथ में प्रोग्रामिंग के अंदर आपके सेंसर से डेटा लेना, वो सब चीजें के साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है। सो आज अगर मैं ओवरऑल मैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करूं, मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करूं, वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट कंसिडर ईच ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज by a single specs that we are wearing. We have to have a better understanding of seeing these all the technologies with a single lens. So this is the message that I wanted to give specifically to all the electronic students, because while we do our research, or while we do our studies, we try to consider this as an individual thing. But if you want to sustain yourself, or if you want to prepare yourself for the future, it is very important that you have to have a broader view about it. So basically, the digital computing that we have seen till now is a model which I represented on the left side, in which we give data and algorithm as an input, and we generate a result. But in the new terms, the new technological paradigm that we are seeing right now, in the AI and ML related thing, we are giving data and results as an input, and we are generating the algorithms. So this is a new what we can call a technological shift that we are seeing, which is represented in both this diagram. Previously, so the step towards the AI and machine learning goes from the left to right only, but we must have to have a focus that through data and the results and the data that we have available, we are with us, we have to generate the algorithms, or we can call as a system of procedures we have to generate through this data and result. So this is the basic difference between AI and the digital computing model that we have. So what exactly Internet of Things is, as I've already told that my field of working, and I have given a huge amount of my time specifically working into robotics, artificial intelligence, IoT, and automations. So I'll try to explain you what exactly IoT is and what is the future scope of IoT. So as we already know that IoT is a proposed development of the internet, in which every object that we see around us, whether it's a coffee cup or a shoe or a belt or a smart necklace or everything, that every objects have a network connectivity and allowing them to send and receive data even without the intervention of human being. This is very important, and this is coming up right now. All the objects that you see around you, we are seeing ACs, fridges, washing machine, smart cars, and there are so many things which are there in front of us and we are using, which are connected with sensors. And we will see many more devices coming up which are connected with electronic circuits, and sensors will sense us and our physical atmosphere, physical what we can call entities around us, and they will talk to each other and send and receive data. So this is the new what we can call updated technology which is coming up, and we have to have a understanding of what exactly this overall thing is. And if I talk about these electronic students, you can have what we can call you should have to have a good understanding of how to take data from sensors, send it to your microcontrollers or your computers, and ultimately send it to the servers that is there implemented, and we can take multiple decisions, and we can implement multiple scenarios, solutions for the multiple scenarios. So if I talk about this IoT revolution, currently we have 5 billion connected computers on the internet, which includes mobile devices as well. And it is estimated that 50 to 60 billion connected devices and appliances, machines, and things will be there in next 10 years. So it is more than 5x. So it is 5 times
more devices that is present right now. So as soon as these devices will increase, it will have a multiple implications. It will come up with multiple challenges, and that I consider as opportunity. The implementation of these IoT are in multiple sectors, which is personalized healthcare. You'll see all the sensors, which can take your health data and which can send it to your near and dear ones and your doctor and everywhere. So, and it will also intimate you at real time. Smart factories, we are already seeing a paradigm shift, specifically into the traditional industries, implementing these new technologies, which is IoT. I'll also take some of the example as well for first 2 points. Smart, intelligent buildings and homes. We are seeing all the devices that is there at our home, which is lights, fans, ACs, TVs. All are connected at a go via mobile app or via voice command with your Alexa and Google Assistants. Smart cities. We are seeing smart meters coming up at our place, at our home. We have recently implemented a smart metering system at Bhopal Smart City. So something of this sort are also coming up in smart cities. There are so many projects that are there with smart cities, and they are really looking for new smart young entrepreneurs coming up and give them solution. I am sure that in the first session, Samir ji have already told you something related to what exactly startup, entrepreneurship, and smart cities are expecting out of you as a young entrepreneurs or young technocrats. Connected cars is also a big thing which is coming up, which is also included with the electrical vehicle EV. Connected cars, or we can call automated guided vehicle or automated cars are a new research field for all the automobile car manufacturers across world. Will in a very near future we'll see with a policy implemented in India, we'll see automated vehicles also coming up in India. So it is also a huge opportunity for us to get involved ourselves, specifically into this connected cars and EV. Drones, we will see drone flying, and we are seeing many researches happening across world. Government of India is in process to create guidelines and policies for the flying of drones, but many major developed countries like Germany, US has already implemented drone based multiple services which is drone based medical delivery and other type of deliveries, as well as drone based farming, surveillance, security, everything. So it will come in India sooner or later, but it is a very important thing which is a part of IoT. A connected drones. So if I'm talking about IoT, it should be a connected one. So all the drones that is working on field will be connected to each other and can send and receive data with each other, giving productive output. Security devices that are watching you are connected with each other, and which can give you multiple notifications and everything. And as these billion devices are connected right now, 5 billion devices are connected right now, and in coming 10 years you will see 50-60 billion devices connected with each other. It comes up with a huge amount of data to be stored or to be processed at a real time on the server. So which is generally in the technical sense called as a big data. So we need many engineers or technocrats specifically who works in this field of big data, analyzing it and using it. So what is like I already always say my students and in my lectures that every situation that comes to us gives us a good opportunity. So COVID is an opportunity for us. Humans are ever evolving species. Learning to adapt is the greatest quality that we have. We are seeing unprecedented collaborations happening across the world between industries, academia, startups, and governments. We have already seen this, specifically into healthcare
and different other things. Collaboration, global collaborations on research are already happening. Multiple countries are sharing their research work with multiple countries on the solution of the problem that we are facing. Global collaborations on vaccine development, information sharing. Civil society and industry and government are also in sync with each other. We are seeing many such NGOs are coming up right now, which what we can call are supporting and helping each other. Localization of farms to home. We are seeing crops that's coming up, are really serving at home, buying from local markets, kirana, and local tourism is another big opportunity that is coming up right now. We are not in position right now to find ourselves and go to different positions, different spots to visit, but we can always see, we are always willing to go to the local nearby traveling places. So local tourism is also one of the opportunities coming up right now. So science is COVID times. Race to understand the virus is there right now. We are seeing across world. Race to find cures and solutions are there right now. Also, large number of non-peer. So if we talk about the numbers, there are large number of non-peer reviewed paper published after the COVID-19 period. So by this we see that there are so many research and academic work also going on across world. 24,000 peer-reviewed papers are published till date after COVID-19. So this is a recent findings that I've seen. So this is what I wanted to say is every sector are right now working hard to come up with their strong version, specifically after this COVID-19 period. So India opportunity, it's the second largest consumer base across world, major developed economies. It's a 10 trillion, it will be a 10 trillion market in next 10 years. We have a big number of middle income income group in India. Several world-class companies are from India. There are so many big brains, very good brains are also there, which is from India. So we have a huge opportunity, specifically if I talk about the consumers or the overall market that is. So being a second largest populated country across world, it gives us a good opportunity to present and to establish ourselves into this new ever changing market. Startup statistics that I want to show: 3,000 to 4,000 startups are generated every year. 2.5 lakhs employees are there into startups as of 2019. E-commerce, fintech, medtech, agritech, life sciences, B2B and edtech are some of the major key points or key startups that is coming up right now. Also jobs in e-commerce, local delivery, supply chain, highly skilled. The coming jobs will be in e-commerce, local delivery, supply chain, highly skilled software professionals, which I already talked: AI, ML, VR, AR, 3D printing, robotics, data science and related stuff. So this is the statistics that is right now available. So if you want to go for a job, you have to have a better understanding of all these new things. If you want to start up, this is best time to start up and to implement the things that you have in your mind. So overall statistics, if I talk about 39 to 50k active startups are there. 36 unicorns, which is $1 billion company in itself or a startup in itself. We have 36 unicorns. Total investment is 160 billion US dollars, more than 160 billion dollars, and total employment that is generated through this is 6 lakhs and more. So why I wanted to say this is that we always say time to startup is now. This is a very right time to think about going for a startup, specifically if you are starting into your core field. I always say my students that the 4 year of your engineering is something which is which you can leverage and you can use to experiment all the things. आज अगर मुझे कुछ नई चीज करना है तो मुझे बहुत सारा
रिसर्च करना होगा, बहुत सारा सोच समझ की चीजें करना होगा। बट अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो अगर आप इस चीज में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो 4 साल का जो समय आपको मिलता है आपके पास में, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल का अगर समय मिलता है, तो आप इन समय में अपने जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन है वो कर सकते हैं, अपने आप को इन न्यू टेक्नोलॉजीज के प्रति डेवलप, या जिसको बोल सकते हैं अवेयर भी करवा सकते हैं, और न्यू स्टार्टअप्स के प्रति भी सोच सकते हैं, क्योंकि टाइम टू स्टार्टअप इज नाउ। और जो स्टैटिक्स देख रहे हैं हम लोग, हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की तरफ बात कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग हार्ड, आवर इकोसिस्टम इज स्लोली एंड स्टडीली डेवलपिंग। मैं जब स्टार्टअप की फील्ड में जब आया था, उस समय कोई ऐसा बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल था, बट आज incubators, accelerators, and there are so many things. If you also have an incubation center in your college, I had a word with the HOD of your department. So there are so many things happening around you. So this is something which is the right time to think about something new, to think about a problem and give a solution about it, and go to market, experiment it, reiterate it, and then what you can call finish your product or services that you have. So this was the startup things that I have already told you. So through this conversation, I just want to ask 3 questions to all the students out there who are listening this live, and after this video who are listening this offline. So do you want to build a driverless car, or just wanted to be a passenger? This is the basic question that you have to ask yourself. You just always wanted to become the user, or you want to become a developer? You are seeing all the automations happening around you. Home automations, industrial automations, every industries are doing automation. So you just want to see and from outside, or you want to be the part of the change that is happening around you? Do you want to build a better India, a developed India? This is also the question that needs to be asked to yourself. If you want to become a better India, we have to make ourselves ready for the change that we wanted to see. Do you want to help your fellow citizens achieve a better life? If yes, that always starts from you. If I talk about the word Atmanirbhar, तो आत्मनिर्भर का अगर मैं मीनिंग समझने की कोशिश करूं, तो इसका होता है स्वयं पर निर्भर होना, अथवा अपने काम को खुद करना। सो अगर मैं इस आत्मनिर्भरता के सपने को पहुंचाना या एक लेवल पे जानना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट एक आइडिया जरूर दे सकती है, बट जब तक हम एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम जब तक स्वनिर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हमारा सोसाइटी नहीं हो पाएगा और ओवरऑल हमारा कंट्री नहीं हो पाएगा। तो ये आत्म मतलब स्वयं से। तो इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेंगे, और इस चेंजेस के साथ में अगर आपको अपने आप को रेलेवेंट रखना है कमिंग 5 to 10 years के अंदर, तो आपको जो है इस चेंजेस के साथ में अपने आप को ढालते हुए, नई चीजों को लर्न करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। In summary of my presentation, India has an opportunity to grow faster because we are still developing country. Emerging technologies will change every business and industry, and we are seeing right now, and we see a tremendous change coming in future. Innovation, entrepreneurship, and startup will drive most of these changes. So being a technical student, you have to right now focus on creating something new, which is known as innovations. Then you have to use that knowledge into creating entrepreneurship, or creating, or by becoming an entrepreneur, you have to implement that knowledge and create a business out of it, and or a startup out of it. So this is a very important thing. Ecosystem to support high growth must be created at every level. If I'm talking about every level, you have to start from yourself at the academia and the college level. College must have to have a support structure or an ecosystem developed with them. Also, government is also working to create multiple innovation hub, or what we can call the accelerator programs that they have.
to help these startups to go to the next level. There are multiple such communities. I am a part of a community which is known as Head Start, which is a non-profit community which is working across India to help this early stage startup who have their idea in mind and wanted to implement and take first few steps to become sustainable. So this is the fourth point, and the last is you must believe in dreams and try and push yourself hard to make that happen. This is very important. If so, like human beings are different from other species because we have emotions and we have a thinking capability, and we can make ourselves ready, or we can make or prepare ourselves to implement those dreams that we have into reality. So this is a summary. I just want to what we can call wind up my presentation by a quote from George but not Shaw. You see things and you say why, but I dream things that never were, and I say why not. So be an innovator, be a young thinker, be an implementer, and ultimately contribute to the journey of success of India. Thank you very much from my side. This is something which is if you want to reach out to me, this is something which is my contact details. I am open to take questions from all the participants who are out there right now live, and I'll be more than happy to help. Over to you, Taksh. Thank you so much, sir. So we have many questions pouring. So, sir, should I start with the questions? Yes, Sure, yes, sir. please, please. So the first question we have from a third year electronics student. Sir, how innovation is different from invention? As an electronics engineer, I can do invention, I can publish it, but how to convert that invention into a full-fledged product? Okay, good. Good, Aman. You have a very good question. How innovation is different from invention. So, invention, which we can, मतलब मैं अपने को उसको बहुत simple terms में जानने की या समझाने की कोशिश करूं. So, invention is something which is very new, which we can call as a discovery. कुछ एकदम नया निकाल के सामने दुनिया को सामने प्रेजेंट करना, वो होता है हम लोग का इन्वेंशन. ठीक है. और इनोवेशन जो है उसका चूंकि बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच के डिफरेंशिएशन की, बट इनोवेशन के अंदर हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पे रिसर्च करके हम उसमें अपने योगदान से उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें, उसको हम लोग इनोवेशंस कह सकते हैं. सो इनोवेशंस बहुत अलग अलग तरीके पे होते हैं. आप मैनेजरियल रोल के अंदर भी इनोवेशंस कर सकते हैं, नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में. आपकी प्रोसेसेस क्या होने वाली है, जैसे मैं अपने स्टार्टअप की बात करूं तो मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे डिलीवर करूंगा. मैं इस कोविड-19 के बाद में मेरे डिलीवरी पैटर्न्स क्या होंगे, मेरे एसओपीज नए टाइप के क्या होंगे, इसके ऊपर जो मेरी रिसर्च है उस पे मैंने चेंजेस करके जब डिलीवरी स्टार्ट करी, उसको मैं इनोवेशन कह सकता हूं. ठीक है. सो अब जहां तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है, तो जो भी आप इनोवेशंस कर रहे हैं, देखिए हम जब भी मैं एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स के साथ में काम करने का बहुत समय से मौका मिला है, तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम लोग रिवर्स काम करते हैं. पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहां फिट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. हमें अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को पहले ढूंढना होगा. वो आसपास के प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एजुकेशनल, एनी प्रॉब्लम्स दैट यू सी, और उन प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम लोग. सो जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो वो मार्केट में जाने लायक होगा. जब आप प्रॉब्लम मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके सभी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर व्यक्ति की, कि वो अगर मिल जाए तो कितना फायदा होगा. मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अभी मेरा एक कलीग है जिसने एक ईसीजी मशीन बनाई है. ही इज फ्रॉम देहरादून, और उसने ये जो दिख रहा है, इतने साइज की, इतनी छोटी साइज की जो है मैच बॉक्स के साइज की ईसीजी मशीन बनाई है, और
वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ईसीजी मशीन फ्रॉम अ गाय फ्रॉम अ देहरादून। कैसे उसको समझ में आया? उसका एक फ्रेंड था, वो साथ में हॉस्टल में थे और उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। काहे से? हार्ट डिसीजेस के कारण। और वो हार्ट डिसीज के कारण 23-24 साल के अंदर वो व्यक्ति चले गया। उसको वो जो थी सिचुएशन, उसने इस सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरफ देखा, क्योंकि वो उस व्यक्ति को बचा नहीं पाया। और उस प्रॉब्लम को क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लंबा है, कॉस्टली है, सब कुछ है। उसने ऐसा कुछ, क्योंकि हार्ट रिलेटेड चीज पता नहीं चलती, एकदम आता है और कई बार व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो उसके दिमाग में थॉट आया कि क्यों नहीं मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊं जो कि हर व्यक्ति अपने घर में अपने साथ में कैरी कर सके, पोर्टेबल रह सके, हाथ में लगा, जैसे हम लोग ऑक्सीमीटर अभी लगा के चेक कर रहे हैं ना ऑक्सीजन, वैसे हम लोग जो है ऐसी डिवाइस जो घर पे लगाया, 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट आई कि भैया आपकी हार्ट की स्टेट क्या है, और आप उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स को मिल लो। तो पहले ही अगर आपको पता चल जाए तो आप व्यक्तियों की जान बचा सकते हो। 7,000 रुपए में उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आज जो है ही इज रेजिंग सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग, और अभी वो 26-27 साल का लड़का है, देहरादून से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी तरफ आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा। मैं बहुत सारे अपने लेक्चर्स के अंदर एक बच्चे का एग्जांपल और लेता हूं। एक बच्चा है गुजरात से, मैं अभी उसका नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। उसने ड्रोन बनाया है, ही इज फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, और उसने माइन डिटेक्टर ड्रोन बनाया है। उसके फादर जो है वो समथिंग कुछ सिक्योरिटी पर्सनल से रिलेटेड थे, और उनसे जब उसने डिस्कशन किया तो उसमें यही पता चला कि जो नक्सली एरिया है वहां पे ड्रोन लैंडमाइन बिछा देते हैं। जो नक्सली लोग हैं वो लैंडमाइन बिछा के लोगों को, मतलब पुलिस पर्सनल्स को मार देते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाए? उसने ये सोचा कि हमारी जो पायलट गाड़ी आगे जाती है उसकी जगह ड्रोन जाए और वहां पे वो लैंडमाइन को हवा में उड़ते उड़ते डिटेक्ट कर ले और बता दे पहले कि यहाँ पे जो है लैंडमाइंस हो सकते हैं। आज वो बच्चा जो है ही इज अ एंटरप्रेन्योर इन इटसेल्फ। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसको सपोर्ट कर रही है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और आज वो वर्ल्ड में अपने अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं भी प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रेसिडेंट और इंडियन तो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सबने उसके उस प्रोडक्ट को देखा। कहने का क्या मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन गो फॉर अ सॉल्यूशन। आई एम श्योर इट विल कम आउट एज अ फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट। हाँ, अब उसके अंदर उसको बेचना कैसे, सेल्स कैसे करना है, टीम कैसे बनाना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप स्लोली एंड स्टडीली सीख सकते हैं। आई होप आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। Yes, sir. So, sir, moving on to our next question. It is from a second year student. Sir, how will we solve the problems of loss of jobs taken up due to robotics and automation, especially because India is a huge unskilled market? Very good. Thank you, Piyush, for this very good question. I always expect this question in my sessions. लास्ट 3 महीनों में लगभग 15-20 सेशंस लिए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, और हर जगह ये क्वेश्चन आया है जरूर, क्योंकि बीइंग अ रोबोटिक और ऑटोमेशन पर्सन, पीपल यूज्ड टू आस्क कि ये जब आप इतनी सब ऑटोमेशंस कर देंगे तो जॉब्स का क्या होगा। तो इसमें इसके सॉल्यूशन दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट ये है कि वर्ल्ड जो है आज एक चेंजिंग मोड में। हम ह्यूमन जो है वो एक इवोल्यूशनरी स्पीशीज है, हम एक जगह रुक नहीं सकते। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए ही तो हम जो है वहां से आते आते आज मोबाइल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, मून, सब जगह जाने की बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती। इस इवोल्यूशन को आप नहीं रोक सकते, आप और हम नहीं रोक सकते। तो या तो हम दूर से देखें और दूर से कोसें, या उस रिवॉल्यूशन का पार्ट बन जाए और अपने आप को उस चेंज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें, पहला। दूसरा, इस आंसर का दूसरा पार्ट यह है कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो पहले से, जब हम शुरुआत में उसको इम्प्लीमेंटेशन के पहले देखते हैं तो वो एक मेजर चैलेंज के रूप में दिखते हैं, बट आगे जाके मेजर कंट्रीब्यूटर वही चैलेंजेस हमको आगे जाके मिल जाते हैं। कैसा कि जब पहले के समय में कंप्यूटर्स लॉन्च नहीं हुए थे, आपको अगर याद हो या आप कभी पढ़िएगा, आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने उसको कुछ हद तक महसूस किया है, हमारे ऊपर की जनरेशंस ने उसको, उस ट्रांजिशन को बहुत क्लोजली देखा है। जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो पहले काम जो हुआ करता था वो रजिस्टर्स के ऊपर लिखने का काम हुआ करता था, सब काम मैनुअल एंट्री के थ्रू और वो सब चीजें हुआ करती थी। तो जब ये कंप्यूटर्स आना चालू हुए तो लोगों ने इसी टाइप का
मार्केट में एक ऐसी चीजें फैली कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों का जॉब चले जाएगा, कि वो हाथ से लिखने वाले लोग जो हैं उनका जॉब तो खत्म हो जाएगा कंप्यूटर आने के बाद में। बट आज आप अगर देखेंगे, आज डाउन द लाइन 20 इयर्स आप देखेंगे, तो आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जॉब्स का क्या है? कंप्यूटर रिलेटेड जॉब ही है। आज वर्ल्ड के अंदर जो भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स में तो हो रहे हैं। कहाँ आज वो रजिस्टर कहाँ हो रहा है, और कितना ज्यादा इनोवेशन और नए टाइप हमारे को सुविधा भी कितनी मिल गई। तो वैसे ही आज रोबोटिक्स के अंदर जो इनोवेशंस हम देख रहे हैं, हमको ये जरूर है कि जो अनस्किल्ड मैन फोर्स है, जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनको परेशानी होगी। या अगर मैं नए टाइप के जॉब्स की बात करूं तो हमें अपने आप को उन नए सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर जरूर करना पड़ेगा, उन नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ में अपने आप को ड्राइव करना पड़ेगा। अगर हम चेंजेस के साथ में हैं, आई एम श्योर आपका वो जो जॉब है या जो जीवन यापन के लिए जो चीजें चाहिए वो 100% हमको मिलेंगी। हमको चेंजेस का पार्ट बनना पड़ेगा, और हम कोसने से रोक भी नहीं सकते, एक बात तो ये। तो इसलिए बेटर ये है कि अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें ह्यूमैनिटीज के लिए, चेंजेस के लिए, इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस, जीने की एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए। यस सर, श्योर सर। So, sir, moving on to our next question, we have what role industry IoT will play in accelerating Nirbhar Bharat? Okay, very good. Krishnam Shastri, thank you very much, Krishnam, for this good question. What role IoT, industrial, I am sure you are asking, industrial IoT will play in accelerating Nirbhar Bharat. So, Krishnan, we are experiencing industrial 4.0, industry 4.0 revolution coming up. So all the traditional industries that we are seeing right now are in process of shifting their traditional pattern of working into a IoT related thing. और उससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब हम मास प्रोडक्शंस की बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं अपने प्लांट्स के अंदर काम करती है, और कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मल्टीपल लोकेशंस को मैनेज नहीं करने कारण अपने जो डेवलपमेंट है या जो अपना एक्सपांशन है उसको रोक देते हैं, क्योंकि यार इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनके अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग लोकेशन पे इंडस्ट्रीज हैं, और उनको मैनेजमेंट करना होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है कि जब ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम्स काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, और इससे कई सारे बड़े बड़े बिग लॉसेस भी इंडस्ट्रीज को देखना पड़ते हैं। बट विथ इंडस्ट्रियल आईओटी, चाहे वो डिवाइसेस एक लोकल प्रीमाइसेस में हो, चाहे डिवाइसेस अक्रॉस वर्ल्ड किसी अलग अलग लोकेशंस पे लगे हुए हों, जब ये डिवाइसेस आपस में बातचीत करेंगे तो ये अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, और जो फेल्यूर रेट है उसको भी हम कम कर पाएंगे, और जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो इंडस्ट्री के कम होंगे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अभी जो है हमारे रिसोर्सेज उतने प्रॉपरली यूटिलाइज, जितना होना चाहिए उतने यूटिलाइजेशन नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज होता है हमारे प्रोडक्ट का, और कॉस्ट जब इंक्रीज होता है तो उसकी जो वायबिलिटी है, जो वायबिलिटी और वायबिलिटी जो है वो नहीं आ पाती। इसलिए हम देखते हैं कि जब चाइना से प्रोडक्ट आते हैं तो वहां पे ऑलरेडी इस टाइप के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, वहां पे इन टाइप का बड़ा वो सिस्टम इतना उनका जिसको बोलते हैं मैच्योर्ड सिस्टम है कि उनका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम आता है, और उसके कारण हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जाएं और वहां से इंपोर्ट होने के बाद में जो चीज आती है वो भी हमको सस्ती मिल जाती है। तो इसीलिए आईओटी के आने से इंडस्ट्री को एम्पावरमेंट मिलेगा, उनके रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, जिससे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, और हम एक रियल सेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे, जिसमें हमको एक अच्छे, जिसको कॉम्पिटिटिव रेट्स में अच्छी चीजें डेवलप करते हुए और इंडिया में आते हुए मिलेंगी। Yes, sir. So I guess IoT is equal to Nirbhar Bharat. We can say that. Yes, in some sense, because but मैं उसको ये भी कहूंगा कि IoT
जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं ये इसको इंडिविजुअल टर्म्स में नहीं देखा जा सकता तक्ष। यस सर। आज जब आईओटी से डेटा आ रहा है तो ये डेटा ह्यूज डेटा जो है सर्वर पे जा रहा है। तो अब जब इस सर्वर पे जा रहा है तो वहां पे आपका डेटा एनालिटिक्स पिक्चर में आ जाएगा, वहां पे मशीन लर्निंग पिक्चर में आ जाएगा, वहां पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पिक्चर में आ जाएगा। अगर आपके पास में एक रोबोट है तो वहां पे कंप्यूटर विजन पिक्चर में आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग जो है या सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है, ये जब इंडिया में हमारे पास में इंडिया में ही बनेगी तो कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रोडक्ट सोचा जाएगा, जैसे आज हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ऑटोमेशन से संबंधित, अब उस ऑटोमेशन प्रोडक्ट के अंदर आज नहीं चाहते हुए भी आज की जो सिनेरियो है, पहले से तो अभी बहुत बेहतर है पिछले 4-5 सालों के अंदर, बट आज भी ये सिनेरियो है कि हमको अगर उसका कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए तो वी हैव टू हेवीली डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट कंट्रीज, और उसमें भी स्पेशली चाइना। अब उसमें क्या होता है कि आप कोई नई चीज सोचो और अगर वहां पे भी इंडिया चाइना टेंशंस एंड एवरीथिंग इज आल्सो गोइंग ऑन, तो हमारा 3 से 4 महीना उस पूरी चीजों के अंदर की जो वहां से चीजें आना है उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, उसका कॉस्टिंग बढ़ गया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते करते सब चीजें, तो जो हमने एक्चुअल चीज पहले सोची थी और अब जो चीज हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। दूसरा, टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। जब ये चीजें हमारे पास में होंगी तो हम स्वयं के लिए हम खुद का सर्किट देखे, हम लोग दिमाग वाला काम कर सकते हैं, हम कोडिंग आराम से कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइनिंग कर सकते हैं सर्किट्स की। बट जब तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं होंगे, जब तक उसका क्या काम है, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स धीरे धीरे जब मैन्युफैक्चर होंगे तो ओवरऑल सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड एवरीथिंग विल गो हियर इन इंडिया, और उससे एक्चुअल सेंस में हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट होकर हमारे कंज्यूमर मार्केट को हम फुलफिल कर पाएंगे और जो नई डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। यस सर। So, sir, let's move on to our next question. It's related to China as well. So, sir, as India has banned China products after this pandemic, due to which electronic connection has been damaged the most. So, how many opportunity does India have in the electronics sector? After pandemic, due to which electronic connection has been damaged at most, how many opportunities does India have in electronic? Yes. So मैंने अभी जस्ट इसी का ही आपको जवाब देने की कोशिश करी कि इंडिया, चाइना, और ये मालूम है, मुझे लगता है कि ये इसमें भी मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जब हम जा रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, तो ये जब तक सेंटिमेंट जब तक हाई नहीं होता, फॉर्चुनेटली वो अभी हो रहा है और वो इंडिया चाइना टेंशंस की वजह से हो रहा है, बट ये अभी हो रहा है, ये अच्छी बात है जिससे हम आगे आने वाले समय में अपने आप को सेल्फ रिलायंट होते हुए देखेंगे। अगर ये टेंशन नहीं होता तो बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री इंडिया डायरेक्टली कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकता था। तो जो लद्दाख के अंदर चीजें या जो भी इंडिया चाइना टेंशंस हुए हैं, अल्टीमेटली वो हमें एज अ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को ये एक मौका मिला कि हम उसके अंदर वहां पे उनके साथ में एक रिस्ट्रिक्शन लेके, अभी अगले 4-5 साल तक वहां से इंपोर्ट करना बंद करना ये डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारा इवन जो भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, मैं आपको बताऊं, अगर मुझे प्लास्टिक मोल्ड्स बनाने हैं, अगर मुझे कोई भी चीज बनानी, तो उसकी जो बड़ी बड़ी मशीनें जो उसको काम करने के लिए लगती है वो भी अल्टीमेटली चाइना है बनती है। सो वो मशीनरी भी धीरे धीरे डेवलप होना चालू होगी इंडिया में, और अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो हम अगले 5-6-7 साल के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे। बट इसको एक पॉइंट पे कभी ना कभी होना था, और फॉर्चुनेट हम है कि वो इस पूरी सिचुएशन कारण अभी से हो रहा है, जिसको हम धीरे धीरे, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, जब तक आप मार्केट में आएंगे अगले 3-4 साल के अंदर, तो ये जो सिचुएशन है, एक इकोसिस्टम डेवलप होके हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम हमारे पास भी जब डेवलप हो जाएंगे तो हम रियल सेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। तो चाइना का बैन जो है वो एक तरीके से मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखता हूं। दूसरा, हमने कहा कि हम ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है तो कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को हमको कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा। इसके बहुत बेसिक मतलब
हम लोग बोलते हैं ना समृद्ध और संपन्न अगर भारत बनाना है तो हमें बहुत सारी चीजों में हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े अगर हमको उस आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है। अगर हम बिल्कुल सभी चीजें में अपना कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते तो फिर वहां से चीजें आती रहेंगी और हम उनकी तरफ जाते रहेंगे। तो अगर वहां जाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें और नई नई चीजों को डेवलप करें। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम सेल्फ रिलायंट होके अपने प्रोडक्ट्स खुद से डेवलप कर सकेंगे। Yes, sir, and we all hope that India becomes a superpower after. Yes, India will become. Yeah. So, Yes. so moving on to the next question, we have, sir, from our country manufactures 128 nm chips, but our world is moving to 3 nm chips. So, how our country become Atma Bharat in chip manufacturing, and how AI help in reducing chip manufacturing processes? Okay, good. Achint, good question, beta. Yeah, I don't know if I'm expecting that you are a student. So, हमारी कंट्री में 128 नैनोमीटर चिप्स जो हैं वो डेवलप होती है। 3 mm नैनोमीटर्स की चिप्स कब बनेंगी? देखिए, मैं इसका एक बहुत जनरलाइज आपको उत्तर देना चाहूंगा कि देखिए अभी जो रिसोर्सेज हैं हम उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। पहली बात तो हमको ये सोचना चाहिए। दूसरा, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो देखिए अब एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो चाइना की तरफ से बिल्कुल इतना थिक आता हो, बट हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा अगर साइज वाइज थोड़ा बहुत कम भी है या थोड़ा ज्यादा भी है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर हम काम करें और उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करें, पहला। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सेंटिमेंट्स अभी हाई हुए हैं ये अल्टीमेटली हमारे इंडियन, अभी देखो क्या होता है, इसके पहले एक ऐसी सोच बनी हुई थी, एंटरप्रेन्योर्स की मन की बात करूं, मैंने 2012 में कुछ सेंसर्स और कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश करी थी, बट मैंने उसको बहुत जल्दी 1 साल के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये देखने में आया था कि हम लोग पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैवी हो चुके थे। अब जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे वो हमारा प्रोडक्ट, लेट से एक प्रोडक्ट 100 रुपीज में आ रहा है, बट चाइना से वही प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपीज 60 रुपीज में आ जाता था। तो मार्केट जो है वो तो अल्टीमेटली आप एज अ कस्टमर या बायर आप देखेंगे तो हमेशा 50-60 वाले प्रोडक्ट को ही खरीदेगा ना मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। तो वो जो पहले के समय में और आज के समय में सेंटिमेंट्स में अंतर है। आज हम जो है वो प्रो इंडिया एंटी चाइना पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि आज एंटरप्रेन्योर को ये कॉन्फिडेंस आया है, चाहे वो थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं साइज वाइज, क्वालिटी वाइज तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट बने हुए हैं और बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो आज ये एंटरप्रेन्योर को एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, मैं जो बनाऊंगा वो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू मैं यहाँ पे बेच सकूंगा। नहीं तो पहले वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था लोगों के अंदर। सो जो एग्जिस्टिंग चीज है हम एटलीस्ट उससे स्टार्ट करें एंड स्लोली एंड स्टडीली हम जो है वो उस तरफ देखिए। जो गैप है इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, ये हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से लगी होना चाहिए थी। तो अभी जो गैप है 10 साल का वो आप 1 साल 2 साल में फुलफिल नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर जब हम ये छोटी छोटी बेबी स्टेप्स लेंगे तो आगे जाके जैसा कि अचिंत कह रहे हैं कि 3 नैनोमीटर चिप्स जो है वो भी हम डेवलप करेंगे, बिल्कुल हम वो भी कर पाएंगे, बट उस तरफ हम आगे तो बढ़े, सोचने से तो काम होना नहीं है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत मुझे लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है कि वो वहां तक की चीजें हम डेवलप करेंगे। क्या सर? ओके सर, यस। So I think we should end our question answer round here. Yes. Yeah. So there are now so many I questions. I also see. Yes, sir. There are so many questions. Let's move on. So now, sir, I would like to invite Aman Jain for the thank you note. Okay. Aman, your voice is not audible, Aman. Aman, you are muted. Yes, sir. On behalf of Institute Innovation Council, Electronics and Communication Department, I, Aman Jain, leader, Srijan Entrepreneurship Cell, Acropolis Group, would like to extend my heartfelt gratitude towards you for taking this session. It was very informative and well received. The attendees understood the opportunity in electronic sector after COVID-19. Your knowledge,
made the student aware of the world after electronics after the pandemic. Your presence made this summit an open-hearted and productive affair. Thanks for joining, dear Mudit Thakkar, sir. Welcome, Now, most welcome. I would like to thank entire panel to join entire panel of Acropolis and student panel for joining our session, our entire conclave of 5 days. There are a lot of speakers awaiting for you in day 4 and day 5. Thank you so much, dear attendees, dear Mudit sir, and thank you, Acropolis, for inviting me. It's a sheer privilege for me to speak in front of this august audience. I'm sure that all the audience will be benefited in very small way, benefited out of it. If you want any help, any support from my side, I'm always up. I just want to conclude the overall session with a quote that I've already done, which is there in Bhagavad Gita, कि इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधे पर उठाना पड़ता है, दूसरों के कंधे पर केवल शव यात्रा ही जाती है। इसलिए इस संसार में प्रसन्न और सफल वही है जो आत्मनिर्भर है। इसलिए आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।